Financial Management, Module 231, Dividend Payouts and Retention. We have talked about the dividend, and we have also discussed that there are two policies which are totally different to each other with reference to payment of dividend. We call them relevance and irrelevance policies. So to understand these policies, we need to understand the dividend payout and retention and the impact of retention and payout. But first, what is dividend payout? It is the amount of profit which is paid as dividend. And in terms of ratio, it is calculated as the percentage of profit which is distributed as dividend. This ratio can be calculated by considering the total amount of dividend and the total amount of profit, or it may be calculated by considering the dividend of one share and the profit of one share. So the dividend payout ratio is calculated as DPS over EPS. यहाँ पर हमारे पास DPO का मतलब है dividend payout, and this dividend payout ratio is actually the result of dividing dividend per share that a company has paid with the earnings of that company, again in terms of per share. Now, we have discussed it a bit that whatever is distributed is dividend. Then we also have some amount of profit which is not distributed. So the profit which is not distributed as dividend amongst the shareholders is the retained profit, and that is what is called retention. So if we have got a percentage of profit paid as dividend, then we also have a percentage of profit that is retained. So that is what is called the retention ratio. यानी अगर हम retained profit को अपने total profit से divide कर लें तो हमारे पास retention ratio आ जाती है. इसी तरह अगर हम फर्ज कीजिए कि रिटेंशन पर शेयर कैलकुलेट करें और उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करें तो तब भी हमारे पास रिटेंशन रेशो की परसेंटेज आ सकती है. लेकिन जनरली हम इस रिटेंशन रेशो को, जिसको कि फ्लो बैक रेशो भी कहा जाता है, हम डिविडेंड पे आउट रेशो के ज़रिए से कैलकुलेट करते हैं. यानी अगर हम 1 माइनस डिविडेंड पे आउट करेंगे तो हमारे पास रिटेंशन रेशो आ जाएगी. या ये फॉर्मूला जो आपके सामने है, इट इज़ 1 माइनस DPS. अगर डिविडेंड पर शेयर को 100% में से या 1 में से माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास वो परसेंटेज बच जाएगी जो कि रिटेन की गई है, और अगर हम उसको EPS से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिटेंशन रेशो आ जाएगी. एंड दिस इज़ how we calculate it. Now, the important thing is that what is the effect of dividend payout and what is the effect of retention ratio. पहली बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि अगर प्रॉफिट अर्न करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो कंपनी के पास जो उसका स्टेटस था, या इन अदर वर्ड्स जो उसकी बैलेंस शीट का साइज था, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा. सपोज अ कंपनी स्टार्टेड विद 100 million, दे अर्नड 5 million प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द होल 5 million, तो एक साल बाद कंपनी फिर वही 100 million पर खड़ी होगी. लेकिन अगर यही प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय रिटेन कर ले तो एक साल बाद कंपनी 105 million पे खड़ी होगी. एंड इन द नेक्स्ट ईयर, द सेकेंड ईयर, व्हेन दे विल अर्न प्रॉफिट, दे विल नॉट अर्न प्रॉफिट ऑन 100 million, but they will earn profit on 105 million, जो कि पहले साल के मुकाबले में डेफिनेटली ज़्यादा होगा. सो ये बात जहन में रखने की है कि डिविडेंड का पे करना अच्छा है, शेयर होल्डर्स उससे खुश होते हैं, वो उनका रिटर्न है. लेकिन अगर कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसको प्रॉफिट रिटेन करना होगा. नाउ we conclude from this that higher dividend payout ratio actually reduces growth, क्योंकि आपने वो अमाउंट
जिसको री इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे वो डिस्ट्रीब्यूट करती, और अगर आप उसी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को रिटेन कर लेते तो आप उससे मल्टीप्लाई करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे. सो वी से दैट हायर रिटेंशन रेशो इंक्रीजेस द फ्यूचर ग्रोथ. यानी किसी भी कंपनी की ग्रोथ का ताल्लुक इस बात से है कि वो कौन सी डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, उसने कितने परसेंट अपना डिविडेंड पे करना है आउट ऑफ द अर्निंग्स, एंड the result is that more is that amount which is distributed, lesser is the growth. क्योंकि ग्रोथ डिपेंड करती है रिटेंशन के ऊपर. जितनी रिटेंशन ज़्यादा होगी उतनी फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा होगी, और उसके अगेंस्ट जितनी पे आउट ज़्यादा होगा उतना ही उस कंपनी की ग्रोथ कर्टेल हो जाएगी. सो द nutshell is that dividend policies are about payouts and about retentions. And payouts and retentions have a direct impact on the growth, future growth of the company. So the policies need to consider this element.